हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मास्टर मेंस। तो आज हम देखेंगे कि 16th प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का जो न्यूज़ है उससे रिलेटेड वो क्या है। आज उसको हम अच्छे तरह से डिकोड करेंगे ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो अगर तो आप एक अच्छा नोट्स बना पाओ और उस नोट्स का यूज़ कर सको एग्ज़ाम में। इट मे बी ऑफ यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीसीएस और फिर फॉर एनी अदर एग्ज़ाम। This can be a reference material for you and you can use this in any exam. तो जैसा कि आप सबने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से जो मार्केट में एक बहुत बड़ा ये रूमर चल रहा है या फिर न्यूज़ है कि जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, किस लिए लिया गया, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्या वो रिलेवेंस था और क्या जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट ने उस 14 क्वेश्चन को जिसे प्रेसिडेंट ने पूछा था सुप्रीम कोर्ट से। सो विल सी वन बाय वन। सो द बैकग्राउंड वाज दैट अ टू जज बेंच दैट ऑलरेडी वी आर नोइंग दैट हैड गिवन जजमेंट ऑन 8th of April 2025। क्या जजमेंट था कि उसमें था कि फिक्सिंग द टाइमलाइन फॉर द प्रेसिडेंट और गवर्नर टू ग्रांट द असेंट टू द बिल्स। स्टेट के जो बिल होते थे वो जाते थे गवर्नर के पास और गवर्नर के पास कोई टाइम लिमिट नहीं था उसको असेंट देने का, तो वो एज इट इज़ रह जाते थे। तो उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए, जो सब्जेक्टिविटी था उसको ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया था। तो हम ये देखते हैं कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो है किस आर्टिकल के अंदर दिया जाता है। तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो है वो आर्टिकल 143 के अंदर आता है और इसमें दो सब क्लॉज हैं। तो आर्टिकल 143(1) एंड आर्टिकल 143(2). तो आर्टिकल 143(1) क्या कहता है कि प्रेसिडेंट मे रिफर एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर इट्स ओपिनियन। तो सुप्रीम कोर्ट को जो प्रेसिडेंट है उसे प्रेसिडेंट को अगर लगता है कि कोई क्वेश्चन है दैट इज़ रिलेटेड टू लॉ और द फैक्ट ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, तो उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट से वो ओपिनियन सीख कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है उसको प्रेसिडेंट को आंसर करने के लिए या ओपिनियन देने के लिए। ओके, एट द सेम टाइम जो रिकमेंडेशन या ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट देंगे प्रेसिडेंट को वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं है। प्रेसिडेंट मे और मे नॉट एक्सेप्ट दैट ओपिनियन। सिमिलरली आर्टिकल 142 clause 2 refers that a dispute arises out of pre-constitutional treaties or agreement. In that case, president may seek advice or opinion from the Supreme Court. But in this case, it is mandatory to the Supreme Court. In this case, it is mandatory to the SC to give advice. But in this case, it is not mandatory. So now we'll see, as already we have discussed, कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पहले एडवाइस लेते हैं, उसके बाद प्रेसिडेंशियल रेफरेंस प्रेसिडेंट को देते हैं। तो इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट की जो ओपिनियन दिए उसको एक्सेप्ट करना है, नीदर इट इज़ बाइंडिंग ऑन सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन देना मस्ट है इन केस ऑफ 143 clause A, बट इन केस ऑफ 143 clause 2 इट इज़ मैंडेटरी। ओके, नाउ विल सी इज देयर एनी इंस्टेंसेस इन द पास्ट जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट ने रेफरेंस मांगा हो। से यस, इट इज़ देयर। द फर्स्ट केस वॉज बेरुबारी यूनियन केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप कोई टेरिटरी सीड कर सकते हैं। सो सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर फॉर सीडिंग टेरिटरी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बना करके अमेंडमेंट करके आप उसको सीड कर सकते हैं टेरिटरी। एंड द सेकेंड वन वॉज द थर्ड जज केस। इन दैट सुप्रीम कोर्ट mainly president asked, like, what does it mean by consultation with the CGI be interpreted? Like, full question it was कि how should consultation with the CGI be interpreted?
Second word, should the CGI's opinion be taken individual or collectively? Third one, it was what is the role of judiciary versus the executive in appointment and transfer. तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके रेफरेंस में दिया था कि जो कॉलेजियम होता है, कॉलेजियम कंप्राइजेज ऑफ CGI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस, करेक्ट। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने रेफरेंस में बोला। दूसरा रेफरेंस ये था कि CGI's ओपिनियन इज़ नॉट पर्सनल। ही सेड कि क्या CGI का जो ओपिनियन है या कॉलेजियम का, उस CGI का पर्सनल माना जाएगा? तो उन्होंने बोला नहीं, इट इज़ नॉट पर्सनल, रादर इट इज़ अ कंसल्टेशन of the collegium, not the individual opinion. And third, in that third question, he said, Supreme Court, that the consultation has executive has a limited role. The government can seek reconsideration once, but if the collegium reiterates, the government must accept it. तो ये था थर्ड जज केस और बेरुवारी केस. Now we'll see that what was the actual case जिसके कारण कि ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस देना पड़ा था. तो द फर्स्ट आर्टिकल विच इज रिलेटेड टू द पावर ऑफ गवर्नर, सो दैट इज आर्टिकल 200. So article 200, it says that when a bill is passed by the legislative assembly and is presented to the president, presented to the governor, then the governor is having 4 options. First option, he can assent the bill, he can withhold the bill, he can return the bill for the consideration by the legislative council, and if he is reserving bill for the consideration of legislative assembly, and again if it is coming to the governor with or without amendment, then governor has to give assent to the bill. And the fourth option, what governor is having, that the bill can be reserved for the president's consideration. Now in article 201, when a bill is reserved by the governor for the consideration of the president, then president is having again option of giving assent to the bill, withhold the bill, or return the bill for the consideration of the legislation. Even in that, there is no time limit for the president to decide on the reserved bill. जब बिल रिजर्व कर लिया, फिर प्रेसिडेंट के पास कोई टाइम लिमिट नहीं है कितने दिन में बिल को एसेंट देना है, विथहोल्ड कितना दिन विथहोल्ड कर सकते हैं या फिर उसको रिटर्न कर सकते हैं. ओके, एंड इवन इफ प्रेसिडेंट गिव्स बैक द बिल विद द रिकमेंडेशन एंड अगेन अगर वापस आता है प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव द असेंट एज इट वाज देयर इन द केस ऑफ गवर्नर. सो इसी 2 प्रॉब्लम के कारण सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया था कि 3 महीने का टाइमलाइन फिक्स कर दिया था गवर्नर के लिए भी, प्रेसिडेंट के लिए भी. नाउ विल सी कि क्या क्या क्वेश्चंस जो थे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में पूछे गए थे सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट ने उसका क्या जवाब दिया, क्या इंटरप्रिटेशन था सुप्रीम कोर्ट का उसमें. सो विल सी वन बाय वन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज दैट what are the constitutional options available to the governor under article 200. So already we have seen कि गवर्नर के पास क्या क्या ऑप्शन है आर्टिकल 200 में. पहला एसेट दे सकते हैं आप, दूसरा है रिजर्व कर सकते हैं आप, तीसरा है कि प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रख सकते हैं आप, और चौथा है कि खुद ही उसको रिकन्सिडरेशन के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली में वापस कर दें. ओके, सो द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो गिवन द सेम थिंग. And the second question was, is the governor bound by the ad and advice tendered by the Council of Ministers under Article 200? Then the Supreme Court replied, the governor enjoys discretionary and is not bound by the ad and advice of the Council of Ministers in certain cases, not in all cases, but in certain cases. Is the exercise of constitutional discretion by the governor under Article 200 justiciable? तो जो गवर्नर जो प्रेसिडेंट का रेफरेंस में था, द फोर्थ क्वेश्चन इट वाज कि क्या
जो डिस्क्रिशन है गवर्नर के पास पावर, वो जो दो आर्टिकल 200 के अंदर में, क्या वो जस्टिसेबल है? तो जो उसमें सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस में था वो था कि इट इज़ नॉट जस्टिसेबल। हाउएवर इन ग्लैरिंग सर्कमस्टांसेस ऑफ इंडिफिनिट इनएक्शन अगर होता है, इंडिफिनिट इनएक्शन अगर होता है, then the Supreme Court can issue mandamus to the governor. Okay. Then the fifth question was, is Article 361 on absolute is Article 361 an absolute bar to judicial review in relation to the action of the governor under Article 300? So in that, the Supreme Court said that Article 361 is an absolute bar on the judicial review in relation to personal things. So if it is a personal subject, then it is absolute bar to the judicial proceeding. Next question was, can the time limit be imposed under Article 200? Then the Supreme Court said no. It is not appropriate as the Constitution is silent on that there should be a time limit to give assent to the bill or to how many days they can reserve the bill. Then the next question was, is the exercise of constitutional discretion by the president under Article 200 is justiciable? The same reply it has given as it was there in the governor case. That is no, it is not justiciable. Now the next question was, can the president be bound to timelines while exercising power under Article 200? Then in that case also it says what the option is there with the governor, same option is there with the president. Cannot be bound by the judicial proceedings and the timeline. Next question was, is the president required to seek advice of the Supreme Court whenever a governor reserves a bill for the assent? So in this, the court replied, the president is not required to seek Supreme Court advice. Subjective satisfaction of president is sufficient. So the president is not required to seek Supreme Court advice. Subjective satisfaction of president is sufficient to give assent to the bill. Next question was, are the decisions of the governor and the president under Article 200 and 201 justiciable at a stage anterior into the law coming into force? Then the Supreme Court replied, the decision of the governor and the president under Article 200 and 201 are not justiciable at a stage anterior into the law into force. The next question was, can the exercise of constitutional power and the order of or by that the president, the governor be substituted in any manner under Article 142? See, the power what is governor and president is having can be substituted under Article 142. And then the Supreme Court said the exercise of constitutional power and the orders of the president and governor cannot be substituted by Article 142. So by using 142, you cannot substitute the president's and governor's exercise, constitutional exercise power. If he is exercising constitutional power, is a law made by the state legislature a law in force without the assent of the governor granted? And so the Supreme Court said, no, without the grant of assent, it cannot become the law. Next, in view of the previous to Article 145(3), is it not mandatory for any bench of court to first decide whether a case involves substantive question of law and has to be referred to a bench of minimum just 5? Then they said, no, it is not relevant here, it is irrelevant here. Next question was, do the power of the Supreme Court under Article 142 of the Constitution limit the matter of procedural law? Then the court said, not possible to answer in a definitive manner. The scope of 142 answer as per part of the earlier question. So already we have answered 142 article part. And then the last question was, does the Constitution bar the Supreme Court from resolving center-state dispute except by the way suit under Article 131? It is that no, it is irrelevant to this reference. So by this, Supreme Court has given almost all the answers to the presidential reference and clarified all the doubts. But here one dilemma comes that the judgment says something and the presidential reference says something. So which holds good and which is true? The most important thing here is that a presidential reference is just an advice or an answer
or interpretation of the Supreme Court. It is not a judgment. So what the judgment has been given by the court, it is still valid, and if it has to be negated, then a larger bench need to be formed, and that bench has to give the judgment in that direction, whether it is in the favor or against. So by this, the 5-judge bench of Supreme Court answer the question posed by the precedential reference. So with this, we will conclude that although the precedential reference under Article 143 is distinctive constitutional tool that allows legal consultation even without formal litigation, while the Supreme Court is having power that it is not binding to the Supreme Court to give advice upon it, but it plays a pivotal role in shaping the legal understanding. However, the court's discretionary is there to refuse and ensure that it does not become a political instrument. So there is a case in this, a judicious balance between the executive queries and the judicial restraint is essential to uphold both the constitutional governance and the judicial independence. So by this, the Supreme Court shown that there is a balance between the legislative, executive, in this case it is executive and judiciary, to uphold the constitutional morality. So this was all about the presidential reference, 16th presidential reference, and we have discussed all the 14 points, background, what is presidential reference, article related to the historical background, and the power of governor and president under Article 200 and 201. So as you might have understood the topic's relevance and how it is important, how it is very important for any exam. It may be the upcoming 71st BPSC Mains or the UPPCS or the UPSC. So I would tell that everyone should make a note of it and prepare a good note and revise it multiple times, so that whenever the question comes, you should be in a position to answer in a better way with respect to any other student, because every marks matters. Even if you are having edge of 0.5 marks, it will give a huge difference in the final result, because if 0.5 marks in each question it will give you 10 to 15 marks edge per paper. So just revise it multiple times and be ready with your notes, so that you should not feel like at the exam time you need to think of about the question. So with this, I would like to thank everyone to listen to this lecture, and thank you once again to being the part of this Masterminds family. Thank you.